Now, a teacher wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. So, boys are 30, girls are 20. In how many ways can he select a student? If the monitor can be a boy or a girl. So, the meaning is or. As we have discussed earlier, or indicates that you have to use addition theorem. Okay, that means the principle of counting will be done with regard to addition. So we'll start the sum like this. There are 30 boys and 20 girls. Okay. A student has to be selected. So a boy can be selected in 30 ways. A girl can be selected in how many ways? How many girls are there? One girl. Therefore, the selection of girls can be done in 20 ways. You can say by using the fundamental principle of addition, the selection of a monitor can be done in 30 plus 20, 50 ways. In question number 1, in how many ways can the monitor be selected if the monitor should be a boy? That means it should be a boy. So can I say that solution? In the class, there are 30 boys. Therefore, a boy monitor can be selected in 30 ways. Second is, what is the answer if the monitor must be a girl? So same thing you can write. In the class, there are 20 girls. Therefore, a girl monitor can be selected in 20 ways. So let's rediscuss again. How many boys are there in the class? As per the reference to question number 1, there are 30 boys. So a boy monitor can be selected in 30 ways. Second part of the sum, in the class, if there are 20 girls, a girl monitor can be selected in 20 ways. Let's restart. A signal is generated from two flags by putting one flag over the other. One flag above the other. यानी एक फ्लैग में दो कलर रहेगा. दो फ्लैग को लगा के you are going to make one single flag. So if 4 flags of different colors are available, how many different signals can be generated? So let us assume that there are four flags. 1, 2, 3, 4. These are 4 flags. इसमें से you have to make one flag which is having 2 colors. So let us assume that this is red, this is green, this is black and this is blue. तो अपने पास 4 अलग अलग फ्लैग है, उसको कंबाइन करके कोई भी 2 फ्लैग निकाल के एक सिंगल फ्लैग बनाने के. Now suppose your flag is going to have 2 colors.
ओके, सो पहला कोई भी एक कलर इधर जाएगा, उसके बाद बाकी जो बचेगा उसमें से एक कलर इधर जाएगा, एक फ्लैग इधर जाएगा। सो मेरा बोलने का मतलब है कि पहला ये जगह, दिस इज द फर्स्ट प्लेस एंड दिस इज द सेकेंड प्लेस। अगर ये फर्स्ट प्लेस भरने का है तो यू टेल मी हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव। You can put a red, green, black or blue. That means इसमें you can go for 4 colors. For example, suppose तुमने इधर green लगा दिया, तो ये नहीं कि green चला गया, बराबर है। अभी ये पार्ट भरने के लिए तुम्हारे पास कितना कलर है? You cannot put the same color. You have to put different signals can be generated. Different signals means flags with different colors. तो इधर है ना अपने पास 3 बचा है, तो सेकेंड फ्लैग भरने के लिए आई थिंक यू विल हैव 3 ऑप्शंस। सो लेट्स revamp, understand. See, you got 4 flags of 4 different colors. You have to pick up any 2 and make a single flag. ठीक है ना? अगर मुझे फ्लैग बनाना ही है तो the first time I have got how many colors? I got 4 colors. फर्स्ट टाइम फर्स्ट फ्लैग बनाने के लिए मेरे पास 4 कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू। तो ये भरने के लिए मेरे पास 4 कलर है। सपोज मैंने इधर ब्लैक लगा दिया, तो नाउ माय ब्लैक इज गॉन। सो हाउ मेनी मोर कलर्स डू आई हैव? 3। उसमें से कोई, दैट मींस एक इधर जाएगा, बराबर है। दैट मींस टू फिल अप दिस प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? आई थिंक आई गॉट 3 ऑप्शंस। सो द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग्स दैट यू कैन जनरेट इज नथिंग बट 12। ओके, understood? Okay, look at the board. Let's do it without this multiplication theorem and all that. Let's understand it in a logical way. Suppose मेरे पास 4 कलर है, मुझे एक फ्लैग बनाने का है जिसमें 2 कलर रहेगा। तो मेरे को लगता है रेड ग्रीन एक ऑप्शन रहेगा, बराबर। सेकेंड ऑप्शन रेड ब्लैक रहेगा, ओके। थर्ड ऑप्शन रेड ब्लू रहेगा। Next is I can have green, red, ऊपर green, नीचे red. Then I can have green, black. Then I can have green, blue. Then we can go for black. I can have black and a red option. Then I can have ऊपर black, नीचे green. Then I can have black and I can have a blue. Then start with blue. I can have blue and red, right? Then I can have blue, green. Then I can have blue, black. Count करो कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. That is what we got. 4 options for the first one, 3 options for the second one. Ultimately the answer will be 12. So instead of writing these notes, this is the logical way of doing it. But the only problem is if there are 5 or 6 different colors, then it will be a problematic affair for you. So कैसा करने का? A signal is generated from 2 flags. There are 4 flags of different colors, है ना? 4 अलग-अलग कलर है। That's what I said, red, green, blue and black. The first flag can be any one of the 4 available flags. यानी इधर जो flag बनाना है, that will be any one out of 4. It can be selected in 4 ways. The second flag can be any one of the remaining 3 flags. So how many different flags we had? 4. 4 में से एक तो पहला भर दिया, so automatically you need the second flag. बराबर है। So the second flag can be any one of these 3 flags. So पहला flag के लिए you are having 4 options, second flag के लिए you are having 3 options. You have to fill up, you have to use the first and the second, both. Both means it is this first color and the second color, and implies multiplication theorem. So that's why by using the fundamental principle of multiplication, total number of ways in which a signal can be generated is 4 here and 3 here, that is 4 into 3, that is equal to 12. Understood? They say that a 2-letter word
is to be formed by using letters of the word space. Okay. So first condition is repetition of letters is allowed. So what happens is you have got the letters of the word space. Now you want to form a two-letter word. Okay. So two-letter word means, first of all, let us start with this place. To fix this place, how many options do you have? 1, 2, 3, 4, 5. So to fill up this place, you have got 5 options. Therefore, this place can be filled in 5 ways. Now repetition is allowed means again you will have 5 letters left. So the second place can also be filled in 5 ways. So I will say that the first place I will say that the first letter can be selected in 5 ways, and same the second letter can also be selected in 5 ways. So what is the question? How many two-letter words can be formed? So total number of two-letter words formed will be 5 into 5, that is equal to 25 words. Second, repetition of letters not allowed. So you have got the word, letters of the word space. Okay. So you want to form a letter which is having 2 words. Now, can I say that in the original place, how many letters do you have? 5. Therefore, the first letter can be selected in 5 ways, and the second letter can be selected in 4 ways. Now, why 5 and 4? Now, suppose you use you have to fill up this place. You have to fill up this place. How many letters do you have? You got 5 letters. So you got 5 options here. 5 में से कोई भी लेटर जाएगा. सपोज तुमने ये जगह भर दिया बोलेगा, तो सपोज तुमने इधर C लगा दिया. सो अभी तुम्हारे पास कितना लेटर बचेगा? 4. So to fill up this place, I think you have got 4 options. Is it clear for you? वापस. How many letters are there in the word space? 5 letters. तो अगर मुझे ये जगह भरना है, तो can I say that I have got 5 options? बराबर. Now repetition is not allowed means एक टाइम एक लेटर यूज करेगा फिर से यूज नहीं कर सकते. तो
तो सपोज मैंने इधर P लगा दिया, इधर P लगा दिया, तो to fill up the second this place, can I say that I am having only S, A, C and E? That means I am having 4 letters in my hand. Therefore, total number of words formed is words formed is 5 into 4, 20 words. Now let's go for repetition once again. See, suppose मुझे ये जगह भरना है, I want to fill up this place. तो पहला इनिशियली कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5, तो मैंने ये जगह भरने के लिए I think I'll be having 5 options, 5 choices. So this is 5. Suppose I have used the word P. Okay. Suppose I have used the word P. P चला गया, रिपीट करने का बोलेगा तो फिर से मैं P यूज कर सकता है. So once again, if you go backward, you will have again how many options to fill up this place? I think you will be having 5 letters to fill up this place. Therefore, the total number of words that can be formed will be 5 into 5, that is equal to 25. Here, repetition is not allowed. तो एक टाइम एक लेटर यूज करेगा, वो फिर से यूज नहीं कर सकते. सपोज अभी इनिशियली कितना अल्फाबेट है अपने पास, 5, तो एक लेटर मैंने भर दिया. सपोज आई फिल्ड अप S, S को लगा देना. S I cannot use. तो how many more options do I have? 4. That means this place के लिए I am having 4 options. Means I can do the selection in 4 ways. So the total number of words formed will be 5 into 4. That is equal to 20. Now, how many 3-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 6 if repetition of digits are allowed? Not allowed. Okay. So first, given the digits 0, 1, 3, 5, 6. Okay. Case 1. Three-digit number. Repetition is allowed. Okay. So numbers are 0, 1, 3, 5 and 6. Now just for my understanding, suppose I write 3, 5, 6. Can I say this is a 3-digit number? If I write 5, 3, 0, this is also a 3-digit number. But if I write 0, 3, 5, this is not a 3-digit number, this is a 2-digit number. Try to understand this logic. See, if it is say 306, for example, if it is 306, it is a 3-digit number. 530, 3-digit number. 035, it is not a 3-digit number, it looks like a 3-digit number because 0 here has got no value. So actually this number is 35. 35 is not a 3-digit number, it is a 2-digit number. So now, so the point is, in the hundreds place, in the hundreds place specifically, you should not have 0. Clear? क्योंकि ये hundreds place है, ये tens place है, ये units place है. तो hundreds place में you should not have 0. So I will say that 0 should not appear in the hundreds place. Okay, so हम लोग का ऐसा रहेगा, right? ये है, ये इधर 0 नहीं आ सकता है, तो 0 कवर कर दो. Tell me how many options you have. How many options you have? Which are the numbers which you can fit? Can you put 1? Yes. Can you put 3? Yes. Can you put 5? Yes. Can you put 6? Yes. So can I say that to fill up the hundreds place, can I say that you need 4 options?
1, 3, 5 and 6. Therefore, I will say that the hundreds place can be arranged in 4 ways. So, hundreds place is over. Now, hundreds place already ho gaya. Now, don't bother about the hundreds place. Can you repeat the numbers? Yes, that means you can use 0 here, you can use 1 here, you can use 3 here, you can use 5 here, you can use 6 here. Repetition means same number can be used. So, can I say that the tens place can be arranged in, how many numbers can you put here? 0 chalega, हाँ. 1 chalega, हाँ. 3 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा. Can be arranged in 5 ways. Okay, so ये भी हो गया. Now, so already you have fixed up the hundreds place, you have fixed up the tens place. Now you want to fill up the units place, you want to fill up this place. Can you put the number 0 here? Yes. Can you put the number 1 here? Yes. Can you put the number 3 here? Yes. Can you put the number 5 here? Yes. Can you put the number 6 here? Yes. Are the digits repeated? Yes. That means you can use the same number again and again, again and again, again and again. Therefore, I will say that the units place can be arranged in again 5 ways. Therefore, total number of 3-digit numbers will be, पहला आंसर क्या आया 4, सेकेंड आंसर आया 5, थर्ड आंसर आया 5, 5 into 4 is 20. That means you can form 100 numbers. यानी कैसा 100 numbers रहेगा? 103, 105, 106, then 130, 150, 160, right? Then 156, 165. ऐसा करके तुम लिखते जाएगा ना, total you will be able to form 100 numbers. Case 2, 3-digit number, repetition not allowed. That means you cannot repeat the numbers. So what are the numbers that you have? 0, 1, 3, 5 and 6. See, whenever you have 0 now, try to fill up the first place and the extreme left ka place. So if I put here 0, this will be how many digit number? This will be a 3-digit number. So can I say that 0 should not appear in the hundreds place? Therefore, the hundreds place can be arranged in, you cannot put 0, but can you put 1? Yes. Can you put 3? Yes. Can you put 5? Yes. Can you put 6? Yes. That means it can be arranged in 4 ways. So that means we have filled up the hundreds place. Now, the tens place can be arranged in, now see, you cannot repeat the numbers. Suppose इधर तुमने 1 डाल दिया, suppose, तो 1 नहीं आएगा, तो कौन सा नंबर आ सकता है? 0 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो अपने पास कितना ऑप्शन है? 4. That means it can be arranged in 4 ways. चलो ये भी हो गया. अभी मुझे बताओ, you have filled up this place and this place. तो कितना जगह भर दिया? 2 जगह भर दिया. Now let us assume that you have used 3 and 1. बराबर. Now, how many
options do you have to fill up the units place? How many options do you have to fill up the units place? You got only 3 options. Simple logic लगाने का 5 नंबर था, एक चला गया. 4 numbers are there. एक और चला गया. अभी हाथ में कितना नंबर बचा? 3. You have 5 chocolates. You have eaten 1 chocolate. That means you will have 4. Again, you eat 1 chocolate. You will have 3. Therefore, to fill up the units place, can be arranged in how many ways? 3 ways. By using the fundamental principle of multiplication. अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है, मालूम कैसा पड़ेगा? I have to fill up the first place and the second place and the third place. Can you read it like this? I will fill up the first place or the second place or the third place? No. You will fill up the first place and the second place and the third place, and indicates multiplication theorem. So total number of numbers formed will be, पहला कितना आया? 4, सेकंड भी आया 4, उसके बाद 3 आया, that is 4 4s are 16, 16 into 3 is, you can form 42 numbers. 42 3-digit numbers to be precise. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 2, 3, 4, 5, 6 if repetition is allowed? So solution, you want to form a 3-digit number from the digits 2, 3, 4, 5, 6. The repetition of the digit is allowed. So I will just make a box. I want to form a 3-digit number. 1, 2. Okay, I'm having the numbers 2, 3, 4, 5 and 6. Before you start any problem related to numbers, always check whether in the given numbers you got 0. 0 नहीं रहेगा तो सम इजी होता है, लेकिन अगर 0 रहेगा तो then it is going to be a tough time. If you have 0 in the first place, okay, that place is ignored. So if I ask you 0 to 5 is how many digit number, I think it's a 2-digit number because 0 का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसके लिए 0 है क्या चेक कर लेने का. Okay, now let's start with this place. The digit in the hundreds place can be selected in 5 ways, meaning to fill up this place you can use 2, you can use 3, you can use 4, you can use 5, you can use 6. That means you got 5 options, so it can be selected in 5 ways. Then the digit in the tens place can be selected in. Now suppose you have put the number 3, वापस 3 यूज कर सकते हैं. Therefore again you can have 5 numbers which can be used here. Therefore the digit in the tens place can be arranged in 5 ways. Similarly repetition है ना, so जितना नंबर है वो उतना ही ऑप्शन रहेगा. Digit in the units place can be selected in 5 ways. So by using the principle of multiplication, the number of 3-digit
numbers formed will be 5 into 5 into 5, that is equal to 125 numbers. You can have 125 numbers formed. 234, 243, 223, 233, 232, 332, 443, 434, 456. वैसा करके तुम लिखते जाएगा. In all you can have 125 numbers. See how many numbers has been given to us? 5. पहला चेक करने का उसमें 0 है क्या? 0 नहीं रहेगा तो sum is safe. Can you repeat the numbers? Yes. So first place is not a problem. You are having 5 numbers. If you have to fill up this place, you got 5 options. So the hundreds place can be selected in 5 ways. Then I have to go for the tens place. अभी मुझे बताओ, suppose मैंने इधर 6 लगाया. Can I repeat 6? Yes. That means again I will be having the numbers 2, 3, 4, 5, 6. So again I will be having how many numbers? 5 numbers. Therefore, the tens place can be selected in 5 ways. And similarly, you can repeat the digits. Therefore, the units place can also be arranged in 5 ways. So, by using the concept of multiplication. Now, why multiplication? I have to fill up the first place and the second place and the third place. The term "and" indicates multiplication. So, you have to use the concept of multiplication. That's why you will have to write 5 into 5 into 5. That is equal to, in all, you can find 125 numbers. A letter lock has 3 rings. Each ring has 5 letters. Determine the maximum number of trials required to open the lock. So, solution. A letter lock has 3 rings. 3 rings means ऐसा. Okay. Each ring has 5 letters. Each ring has 5 letters. So, इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 5 लेटर है. हर एक में 5-5 लेटर है. At one time, you can have only 1 letter here. At one time, you can have only 1 letter here. And one time, you can have only 1 letter here. इसमें 5 letter है. You have got the number lock system जैसा suitcase में रहता है मालूम है. You can just keep on rotating it and you can fit a number lock combination. That is a numeric combination. This is an alphabetic combination. So इसमें 5 letter है, इसमें 5 letter है, इसमें 5 letter है. Therefore, each ring has 5 letters. Therefore, a letter from each ring can be selected in 5 ways. By using the fundamental principle of multiplication, the number of trials will be 5 into 5 into 5, that is equal to 125 trials. Okay.
Now let's understand this properly, even more systematically. Suppose let us assume that इसमें alphabet है A, B, C, D, E. इसमें है P, Q, R, S, T. इसमें है U, V, W, X and Y. See, if you try to take a number law combination जिसमें हम लोग सूटकेस में देते हैं, उसमें ना हर रिंग में 10 नंबर रहेगा. It will have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसमें भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. नंबर लॉ कॉम्बिनेशन सूटकेस का. Although you have, if you can put number law combination in suitcase, again you will have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So each ring, this is called as a ring which you can rotate. It will have 10 numbers. So एक टाइम पे इधर कितना नंबर डाल सकता है? ऐसा लिख सकता है क्या? 1 and 2. Can you write it like this? No. Can you write 4 आधा 4 आधा 5? No, not possible. तो उसका मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही नंबर डाल सकते हैं, या तो 4 डालो या 5 डालो. आधा 4 आधा 5 नहीं जाएगा. तो इन वन रिंग एट अ टाइम यू कैन फिल ओनली वन नंबर. सो मेरा बोलने का मतलब है कि इसमें अगर 5 अल्फाबेट है तो एक टाइम पे कितना अल्फाबेट दिख सकता है इधर? यू कैन सी ओनली वन अल्फाबेट. देयरफॉर इफ यू हैव टू फिल अप दिस प्लेस यू हैव गॉट 5 ऑप्शंस. If you have to go to fill up this place, you got 5 options. If you have to fill up the last place, you got 5 options. A letter from each ring, हर एक ring, यानी ये ring के लिए 5 ऑप्शन है, ये ring के लिए 5 ऑप्शन है, ये ring के लिए 5 ऑप्शन है. So see that ring means it is something which will rotate. So can you have, ऐसा हो सकता है क्या? ये करेक्ट है कि रॉन्ग है? ऐसा नहीं हो सकता है. Either you can have A or you can have a B, but you cannot have half A and half B. उसका मतलब है कि if I have to fill up the first place, I have got 5 options. If I have to fill up the second place, again I have got 5 options. If I got to fill up the third place, I got 5 options. So instead of writing 3 times, I have written each ring can be selected in 5 ways. How many rings are there? 3 rings. इसको 5 ways, इसको 5 ways, इसको 5 ways. Therefore, the total number of trials that you make to open the ring will be 125. 5 into 5 into 5. Now, in a test, there are 5 true or false questions. No student has got all the correct answers and no sequence is repeated. What is the maximum number of students for this to be possible? So, given number of questions is 5. Each question has 2 options. Why 2 options? See, if you have been given a question, true or false question, how many options do you have to write the answer? Either you can write a true or you can write false. So every question will have 2 options. Either you can write a true or you can write a false. So if this is question number 1, 2, 3, 4 and 5. This is question number 1. This is question number 2, this is question number 3, this is question number 4 and this is question number 5. Question number 1 अगर अटेम्प्ट करने का रहेगा तो तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? आंसर के लिए कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है. क्या क्या 2 ऑप्शन है? ट्रू लिख सकता है या फॉल्स लिख सकता है. सो क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी अटेम्प्टेड इन 2 ways. Why 2 ways? मन किया तो ट्रू लिखो, मन किया तो फॉल्स लिखो. दोनों तो नहीं लिखेगा तुम. If you are really stupid, then you are going to leave a true or false question in option unless until there is a negative marking.
नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। स्कूल में ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन रहेगा, तुम कुछ भी करेगा उसको या तो ट्रू या फॉल्स लिख के ही आएगा, मालूम रहेगा तो बराबर लिखेगा, नहीं तो तुम पक्का उसको कुछ तो लिख के आएगा। सो इफ यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1, कैन आई से दैट यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, either you can put a tick for true or you can put a tick for false. So what about question number 2? Question number 2 can also be attempted in two ways. Question number 3 can also be attempted in two ways. Question number 4 can also be attempted in two ways, and question number 5 can also be attempted in two ways. So हर एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो चॉइस है, दैट मीन्स यू कैन अटेम्प्ट इन टू वेज, दैट मीन्स यू कैन ईदर राइट ए ट्रू और यू कैन राइट अ फॉल्स। देन यू कैन से बाय यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ multiplication, there can be 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that is equal to 32 sequences. Now what is the meaning of 32 sequences? 32 sequence means शायद तुम सब true लिखेगा या सब false लिखेगा, या ट्रू 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 फॉल्स, या ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, या तुम सबको फॉल्स लिखेगा। तो तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है लिखने का? यू हैव गॉट 32 ऑप्शंस। आई विल जस्ट डिस्कस सम ऑफ द ऑप्शंस वंस अगेन। यू कैन राइट ट्रू 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 ट्रू, वन सीक्वेंस, ट्रू 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 फॉल्स, सेकंड सीक्वेंस, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, थर्ड सीक्वेंस, ऑल फॉल्स, fourth sequence, true false true false true false, another sequence, false true false true false, another sequence, दो true दो false फिर true। वैसा तुम्हारे पास टोटल मिला के you can attempt it in 32 ways, you got 32 options. Now in a test there are 5 true or false questions, no student has got all correct answers. Suppose उसका correct answer है all true, let us assume that उसका correct answer is all true, बराबर है, all true is the correct answer, किसी ने भी नहीं लिखा वो आंसर। तो कहने से अगर टोटल 32 उसका डिफरेंट सीक्वेंस रहेगा तो उसमें एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कितना रहेगा? एक ही रहेगा। मे बी आई अज्यूम दैट ऑल द आंसर्स आर ट्रू इज द करेक्ट ऑप्शन, सो देयर इज नोबडी हु हैज रिटन दैट स्पेसिफिक आंसर, बराबर है। तो they say that since no sequence is repeated, and no student has got the correct answer, total number of students will be 32 minus 1, that is equal to 31 students will be there in the class. वो क्या बोलता है कि कितना मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास में हो सकता है, कितना मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास में हो सकता है, उसका मतलब है कि कितना मैक्सिमम वे में तुमने आंसर लिखा है। एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस व्हिच यू कैन फॉर्म इज 32, लेकिन किसी ने भी उसका करेक्ट आंसर नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा? एक ही रहेगा। आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रू रहेगा, मे बी आई कैन आल्सो अज्यूम दैट इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अगर ये उसका करेक्ट सीक्वेंस है तो किसी ने भी सीक्वेंस नहीं लिखा है, ये 32 में सब कॉम्बिनेशन आ गया, ऑल ट्रू ऑल फॉल्स डबल ट्रू डबल फॉल्स फॉल्स, ओके, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, ऐसा सब सीक्वेंस आ गया। तो ये जो करेक्ट आंसर का सीक्वेंस है ना, वो दैट इज वन ऑफ द सीक्वेंस इन 32। एक वो करेक्ट आंसर किसी को भी नहीं आया, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु कुड बी देयर विल बी
32 minus 1, that is equal to 31. Because they are asking you what is the maximum number of students for this to be possible. How many options do you have? You got 32 options. एक ऑप्शन तो नहीं है. कौन सा ऑप्शन नहीं है? जो सब सही, जो करेक्ट आंसर है वो किसी ने भी नहीं लिखा है. तो यानी कि कितना ऑप्शंस हो गया अभी, कितना जन ने अटेम्प्ट, कितना वे में उसको अटेम्प्ट कर सकता है. The total number of ways in which you can attempt is actually 32. Since none of them have written the correct answer, you can have only 31 options. तो जितना ऑप्शन है, जितना सीक्वेंस बनेगा, उतना स्टूडेंट तुम्हारा क्लास में रहेगा. That is supposed to be the answer. It's a good question. So ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. तो शायद तुम सब ट्रू लिख सकते हैं या ट्रू ट्रू फॉल्स लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू लिख सकते हैं. पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स, नेक्स्ट वाला फॉल्स, पहला फॉल्स ट्रू ट्रू, बाद में पहला फॉल्स सेकंड ट्रू, बाद में फॉल्स, या फॉल्स फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स फॉल्स. यानी कि इन ऑल हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव? यू गॉट 8 ऑप्शंस. इतना लिखने से अच्छा कॉमन सेंस लगाओ. क्वेश्चन नंबर 1 को कितना ऑप्शन है? 2. क्वेश्चन नंबर 2 को कितना ऑप्शन है? 2. क्वेश्चन नंबर 3 को कितना ऑप्शन है? 2. तो 2 into 2 into 2 8. और you sit and write like this: 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the different sequence you can write. क्लियर? हम लोग शॉर्टकट से किया. मैंने कैसे सिखाया? क्वेश्चन नंबर 1 कितना आंसर है? 2 आंसर है. तो यानी कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 2 को कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 3 को कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है. यानी टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी 2 into 2 into 2, दैट इज इक्वल टू 8. नहीं समझता रहेगा तो ये हर एक सीक्वेंस है. शायद 1 को ट्रू, सेकंड को ट्रू, थर्ड को ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, तुम लिखा रहेगा ट्रू, बाद में फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन को ट्रू, सेकंड को फॉल्स, थर्ड को ट्रू, ऐसा करके तुमने सब सीक्वेंस लिखा. अभी मैं बोलता है कि इसका सपोज आंसर ये है, ये आंसर किसी ने भी नहीं लिखा है, किसी ने भी नहीं लिखा है, तो कितना आंसर लिखा रहेगा पब्लिक? 8 है. 8 में से ये तो नहीं हो सकता है. दैट मीन्स द नंबर ऑफ सीक्वेंस is how much? 8. And number of sequence attempted will be 7. क्यों 7? क्योंकि एक भी जन ने करेक्ट आंसर नहीं लिखा है और किसी ने भी वो सीक्वेंस रिपीट नहीं किया. यानी अगर मैंने ट्रू 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 लिखा है तो तुमने ट्रू 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 नहीं लिखा है, तुम और कुछ लिखा रहेगा. उन लोग क्या बोलते हैं कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है, इतना, ये पूरा चॉइस अटेम्प्ट करने के लिए करेक्ट आंसर को छोड़ के द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन गिव द मैक्सिमम सीक्वेंस एलिमिनेटिंग द करेक्ट सीक्वेंस इज 7. सो मैंने भी वही किया. इधर कितना ऑप्शन है अपने पास, कितना सीक्वेंस बनेगा? 32. उसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या है? 1. वो किसी ने भी नहीं लिखा है. तो बाकी का जो सीक्वेंस कितना रहेगा? 31. वो क्या बोलते हैं, जितना सीक्वेंस है उतना स्टूडेंट्स क्लास में होना चाहिए. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास विल बी 31. आई होप इट इज क्लियर.